हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था ब्लड, फंक्शन ऑफ ब्लड, नीड ऑफ ट्रांसपोर्ट और आरबीसी के बारे में। इस क्लास में हम लोग डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ेंगे। डब्ल्यूबीसी विच इज़ ऑल्सो नॉन एज ल्यूकोसाइट्स। सो ल्यूकोसाइट्स one of the cell present in the blood. It is embedded in blood plasma, and here WBC is also known as leukocytes. WBC, its expanded form is white blood cells. इसका मतलब क्या हुआ? white blood cells या white blood corpuscles, क्योंकि WBC अधिकतर समय तक ब्लड में ही रहता है, ब्लड वेसल के अंदर, और इसी की वजह से इसको corpuscles भी कहते हैं। तो ये WBC, white blood cells or white blood corpuscles, as well as it is also known as leukocytes. So leukocytes, we are studying about different features, important features and functions of WBC in this class. और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि इसका शेप कैसा होता है। तो WBC इरेगुलर शेप का होता है, इरेगुलर और अमोबाइड। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि रेगुलर शेप का यानी कि अमीबाइड शेप का होता है। ये अमीबा के जैसा स्पीच कर सकता है, मूव कर सकता है, इसका कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं होता। साइज 8 to 20 माइक्रोन, 8 to 20 माइक्रोन्स के बीच इसकी साइज होंगी। ठीक है, ये वेरिएबल हो सकता है बिकॉज देयर आर 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स प्रेजेंट इन ह्यूमन ब्लड or mammalian blood, and their size may be variable and it may varies from 8 to 20 microns. numbers के बारे में हम लोगों को याद रखना है कि ये 5000 to 9000 per milliliter of blood, या आप कह सकते हैं कि 5000 to 9000 पर मिलीलीटर क्यूब ऑफ ब्लड। हमेशा याद रखना है कि रेशियो बिटवीन WBC, RBC एंड WBCs जो होंगे वो हमेशा 600:1 का रेशियो होगा। मतलब ब्लड में RBC की नंबर्स अगर 600 है तो WBC का नंबर 1 होगा। और इसी के लिए आप कहेंगे कि रेशियो बिटवीन RBCs एंड WBCs इन ह्यूमन ब्लड और मेमेलियन ब्लड इज 600:1। ना ओरिजिन, इसका ओरिजिन लिम्फ नोड्स जैसे कि टॉन्सिल्स, स्प्लीन और फिर बोन मैरो, स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, बोन मैरो में इसका फॉर्मेशन होता है। तो मोस्टली ये लिम्फ नोड्स और स्प्लीन में इसकी फॉर्मेशन होती है। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन को कहेंगे Leukopoiesis is the process in which formation of WBCs takes place in lymph nodes, spleen, bone marrow, thymus, etc. So thymus is also an important organ in which WBC forms. Now lifespan इसका 12 आवर्स से 12 डेज तक होता है। 12 आवर्स to 12 डेज लाइफ स्पैन होती है WBC की। डिस्ट्रक्शन ऑफ वर्न आउट WBCs टेक प्लेस इन द स्प्लीन, मोस्टली स्प्लीन एंड लीवर। तो लीवर और स्प्लीन के सेल्स में, ठीक है, जो वर्न आउट, जो डेड और वर्न आउट WBCs हैं उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है।
इस तरह से यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सेप इरेगुलर अमीबाइड, साइज 8 to 20 माइक्रोन्स, नंबर्स 5000 to 9000 per milliliter of blood, ratio between RBCs and WBCs 600:1, origin lymph nodes, spleen, bone marrow, thymus में इसकी फॉर्मेशन होगी और जो प्रोसेस होगा फॉर्मेशन का उसको हम लोग कहेंगे ल्यूकोपोएसिस। तो ल्यूकोपोएसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ WBCs इन lymph nodes, spleen, bone marrow, thymus etc. आपने पढ़ा था कि जब आरबीसी की फॉर्मेशन होती है तो वो प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, इरिथ्रोपोएसिस। यहाँ पे ल्यूकोपोएसिस आपको याद रखना है। लाइफ स्पैन 12 आवर्स टू 12 डेज, ये वेरिएबल हो सकता है 12 आवर्स से 12 डेज के बीच। और डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉर्न आउट आर WBCs स्प्लीन और लीवर में होता है। डिस्ट्रक्शन के बाद इसे बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। सो इन दिस वे these are the different features of WBCs. Now we will study about function. Function of WBCs. Functions of WBCs. Overall, you can say WBCs are the soldiers of the body and they help in providing immunity to the body. They protect our body from different types of pathogens and diseases or infections. So ये हमारे शरीर के लिए सैनिक कहलाते हैं, सोल्जर्स कहलाते हैं, क्योंकि ये हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। तो सबसे जो पहला फंक्शन होगा WBCs का, WBCs provide immunity to the body from pathogens. Pathogens means here disease causing germ. Disease causing germs are called pathogens. WBCs provide immunity to the body from pathogens or disease causing germs and infections. तो ये हमारे बॉडी को इन्फेक्शन से बचाने का काम करता है और इसी के लिए हम लोग इसे कहेंगे सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। तो ये पैथोजन और इन्फेक्शन से कैसे हमें बचाता है, तो आपको याद रखना है कि दे फॉर्म antibodies and antitoxins. Antitoxins and antibodies are produced by WBC, mostly by lymphocytes. So antibodies and antitoxins आपको यहाँ पे याद रखना है। मान लीजिए कि हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं ट्यूबरकुलोसिस की। ट्यूबरकुलोसिस जिसको हम लोग टीबी भी कहेंगे। तो टीबी के रोग तभी होगा जबकि एक पैथोजन हम लोगों के बॉडी में आएगा और उसे कहेंगे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एक तरह का बैक्टीरियम है और ये जब हम लोग के बॉडी के अंदर इंटर करेगा तो फिर हमें इन्फेक्शन हो सकता है और इसे हम लोग कहेंगे पैथोजन। और दूसरा होता है टॉक्सिन्स, जो कि ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस प्रोड्यूस करेगा, इसे कहेंगे ट्यूबरकुलिन। तो ये एक टॉक्सिक सब्सटेंस है विच इज प्रोड्यूस्ड बाय पैथोजन माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एंड under the influence or effect of tuberculin there are several types of
symptoms can appear in the body of the infected person. तो अब यहाँ पे WBCs पहले से आइडेंटिफाई कर लेता है और ये पैथोजन हुआ, तो इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनता है जो इसके ऊपर एक्ट करता है। तो यहाँ पे एंटीबॉडीज एक्ट्स ऑन, यहाँ पे एंटीबॉडी एक्ट्स ऑन माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एंड किल देम। तो एंटीबॉडी जो प्रोड्यूस्ड हुआ WBC के द्वारा इसके ऊपर एक्ट करेगा और उसे किल कर देगा। और दूसरा एंटीटॉक्सिन्स जो प्रोड्यूस्ड होगा, एंटीटॉक्सिन वो ट्यूबरकुलिन को न्यूट्रलाइज कर देगा, न्यूट्रलाइज। एंड इन दिस वे the effect of tuberculin is not present now, and the person who is suffering with tuberculosis or TB can be cured. So it is the natural method to cure or to prevent infection, because here antibodies and antitoxins are produced by WBCs and they affect on the pathogen as well as toxins, and in this way different types of diseases can be prevented by WBC. So here it is one example. Second is WBC help in phagocytosis, means engulfing bacteria, and it takes place after Diapedesis, which is the squeezing movement. तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि Diapedesis and Phagocytosis, ये दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है WBCs का। तो डायपिडेसिस क्या होता है? डायपिडेसिस इज द प्रोसेस और स्क्वीजिंग मूवमेंट ऑफ WBC फ्रॉम द वॉल ऑफ कैपिलरीज। स्क्वीजिंग मूवमेंट of WBCs from the wall of capillary to engulf बैक्टीरिया। तो स्क्वीजिंग मूवमेंट होती है और इसी को हम लोग कहेंगे डायपिडेसिस। तो डायपिडेसिस इज द स्क्वीजिंग मूवमेंट ऑफ WBC from the wall of capillary to engulf bacteria. And second is phagocytosis. So phagocytosis is the process. Phagocytosis is the process of engulfing बैक्टीरिया। तो जब बैक्टीरिया को या जर्म्स को और जर्म्स, तो बैक्टीरिया और जर्म्स जो हमारे बॉडी में इन्वेडेड हैं उसको इनगल्फ करना, उसे निगल लेना की प्रोसेस को कहेंगे फैगोसाइटोसिस। मान लीजिए कि ये एक ब्लड कैपिलरी है और इसके अंदर ये WBC ये RBC है, ये मान लेते हैं WBC। और अगर यहाँ पे कुछ जर्म्स इन्वेड कर चुका है तो फिर क्या होगा? जो WBC है वो इससे इन्वेड करके बाहर आएगा और इसके बाद
इन्वेडिंग के बाद यहाँ पे जर्म्स को इन्होंने इनगल्फ कर लिया और इस तरह से इसके न्यूट्रलाइज या engulfed germs and in this way squeezing यहाँ पे diapedesis हो रहा है, it is diapedesis. So diapedesis is the squeezing movement of WBC outside of the capillary wall so that it can engulf bacteria or germs if ingested inside the body, it invaded inside the body. So engulfed bacteria or germs. So in this way, this is the process of diapedesis and phagocytosis. So WBCs provide immunity by number 1, formation of antibodies and antitoxins, and number 2, diapedesis and phagocytosis. Again, lymphocytes help in recording the processes by which a particular type of bacteria or germ is protested in the body, and it is very helpful in curing the disease or to preventing the entry of disease in future. So in this way, these are the functions. Now, types of WBC. Types of WBCs. There are two different types of WBCs. Number 1 is granular WBCs or granulocytes. Granular WBCs और granulocytes. अब ये granulocytes क्या होता है? तो कुछ WBCs होते हैं, उसमें अगर साइटोप्लाज्म ग्रेनुलर होगा तो इसके 2 इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं. साइटोप्लाज्म contains granules and number 2, nucleus is many-lobed. Means many-lobed nucleus and cytoplasm contains granules. These are the 2 important features of granulocyte WBC or granulocytes. Types of granulocytes. There are 3 different types of granulocytes, out of which number 1 is neutrophils. Neutrophils, they are about 60 to 70% of total numbers of WBCs. तो ये 60 to 70% टोटल WBC का बनाते हैं. Second important feature, cytoplasm is granular, means a number of granulars are found in cytoplasm, and it has nucleus, and nucleus is 3 to 5 lobed. Nucleus is 3 to 5 lobed, means 3 to 5 lobe nucleus is found in the neutrophils, and they make about 60 to 70% of total number of WBCs. And function, they help in phagocytosis. So phagocytosis is the major function of neutrophils. Diapedesis
and phagocytosis. Diapedesis and phagocytosis is the major function of neutrophil. So it is the function. मतलब ये बैक्टीरिया या जर्म्स जो शरीर के अंदर चला गया है उसे इनगल्फ कर लेता है, उसे खा लेता है, न्यूट्रलाइज कर देता है और इस तरह से ये डायपेडिसिस और फैगोसाइटोसिस में हेल्प करता है. सेकंड टाइप ऑफ ग्रेनुलर WBCs are basophils. Number 2, basophils. Basophils, it is the second type of granular WBCs और ये they form 0.5 to 1% of total number of WBC. और सेकंड जो इम्पॉर्टेंट फीचर होता है कि इसमें 3 lobed न्यूक्लियस इज फाउंड. 3 lobed न्यूक्लियस इसमें पाया जाता है बेसोफिल्स में. और इसके जो फंक्शन हैं ये हेपारिन और फॉर्मेशन ऑफ हेपारिन ये एक तरह का एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस है जो ब्लड को क्लॉट होने से शरीर के अंदर रोकता है. और दूसरा जो होता है वो है फॉर्मेशन ऑफ हिस्टामिन. फॉर्मेशन ऑफ हिस्टामिन. हिस्टामिन इन्फ्लामेशन से हमें बचाता है. सो it is associated with inflammation in the different parts of the body. So you can say it is inflammatory agent. It is inflammatory agent, histamine. So formation of heparin, anticoagulant substance, and histamine, inflammatory agents, are the function of basophils. Now the third type of granular cytoplasm is acidophils or eosinophils. So eosinophils or acidophils are the third type of WBCs, which make about 1 to 3% of. They make about 2 to 3% of total WBC. Nucleus is bilobed, means 2 lobe. So here nucleus is bilobed. 2 lobes of nucleus present here, and they make about 2 to 3% of total WBC. And their function, these are associated with allergy. They are associated with allergy. ये इसका फंक्शन हो गया कि जो भी एलर्जिक रिस्पॉन्सेस होते हैं हमारे बॉडी में उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा एसिडोफिल्स या एसिनोफिल्स. अब यहाँ पे एसिडोफिल्स इसको क्यों कहते हैं?
एसिडोफिल्स इसलिए कहते हैं कि ये जो इसिनोफिल्स है ये स्टैंड हो सकता है कोई भी एसिडिक डाइज में। इसिनोफिल्स are stand in acidic dyes such as eosine, and therefore eosinophils are also known as acidophils because eosinophils are stand in acidic dyes such as eosine. Its function is associated with allergy. So these are the three different types of WBCs which are known as granulocytes. Now the second major type of WBCs are known as agranulocyte. Or non-granular WBCs. Non-granular WBCs are the second type of WBCs. Here again important features are cytoplasm lacks granules, and second feature, nucleus is large and single or kidney shaped. So your nucleus is large and single or kidney shaped nucleus is found. So these are the two important features of agranulocytes or non-granular WBCs. Now the types. There are two different types of agranulocytes or non-granular WBCs, and these are number one, lymphocytes. Lymphocytes. Lymphocytes here lymphocytes, they make about 30 to 35%. They make 30 to 35% of total number of WBCs. So it is the second largest type of lymphocytes on the basis of their numbers. So lymphocytes make 30 to 35% of total number of WBCs. Here cytoplasm is non-granular, means granules are not found in the cytoplasm, and it has a large rounded nucleus. A large rounded nucleus which is prominent is found, and cytoplasm is very less in amount. So here large rounded nucleus is found inside the WBC, which is lymphocytes, and cytoplasm is very less in amount. And its function, they produce antibodies and antitoxins. Antitoxins and antibodies are produced by them. And in this way, lymphocytes help in providing immunity to the body by by formation of antibodies and antitoxins. The second type of agranular
Second type of a granular or non-granular WBC is monocytes. Monocytes, they form about 3 to 7% of total WBC. They form 3 to 7% of WBCs. Your second feature, they have a large kidney-shaped nucleus. So here large kidney-shaped nucleus is found, and then you can say it is monocyte because in the lymphocyte a large rounded nucleus is found which is prominent and cytoplasm is very less inside the cell. But here मोनोसाइट्स में क्या होता है कि एक लार्ज किडनी शेप्ड न्यूक्लियस होता है और ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जिससे इसे आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। अब इसकी फंक्शन क्या होती है, तो ये इनगल्फ करता है बैक्टीरिया को, इनगल्फिंग बैक्टीरिया। इनगल्फिंग बैक्टीरिया इज द मेजर फंक्शन ऑफ मोनोसाइट्स। So neutrophils and monocytes are the two different types of WBCs which engulf bacteria by means of phagocytosis, which is followed by before it diapedesis takes place. So diapedesis and then phagocytosis, and in this way monocytes engulf bacteria and protect our body from the disease causing germs. Overall, the function of WBCs are to provide immunity to the body from different types of infectious agents or pathogens and boost up immunity. And in this way, it is the study of WBCs. In the next class, we will study about platelets and the function of platelets. So don't forget to watch माई नेक्स्ट वीडियो। और अगर आपने आरबीसी के बारे में पहले नहीं पढ़ा है, नहीं देखा है मेरा वीडियो, तो उसे देख लेंगे जिससे कि आपको आराम से समझ में आ जाएगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।